start with introduction to Java program. जावा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर चैप्टर वन में हम देखेंगे आज जावा क्या होता है, व्हाट इज जावा. जावा is a fully object oriented programming language and programming language developed by the Sun Microsystems of USA in 1991. Java is purely object oriented, means we can use with the help of class and object. We can use the Java program with the help of class and object. And how the Java program is work? First we have write the source code and after compile into the bytecode. Bytecode is nothing that but it is helpful in terms of जावा के जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होके फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, वो इंटरप्रेटेड करता है फॉर अ गिवन मशीन. हाउ टू इंस्टॉल जावा. गो टू गूगल एंड टाइप इंस्टॉल JDK. JDK is nothing but the Java development kit. Go to Google and type install Eclipse. Eclipse is like a VS Code. It is a IDE. Eclipse is known as IDE. What is JDK? JDK is Java Development Kit. Collections of tools used for developing and running Java program. JDK का full form है Java Development Kit. Is a collection of tools used for developing and running Java program. Java program को रन करने में हेल्प करता है JDK. और JRE is a Java Runtime Environment, help in execution program develop in Java. वो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है JRE. और बेसिक स्ट्रक्चर है जावा का. फर्स्ट पैकेज के नीचे और एक चीज आती है इंक्लूड लाइब्रेरी हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे. फिर यहाँ पे ऊपर डिक्लेरेशन आता है, यहाँ पे हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं पैकेज के नीचे. फिर क्लास, डिफाइन ए क्लास नेम, ये क्लास नेम. फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG. ये लाइन को आप याद कर लेना, ये मेन है, इसके बिना कोड रन ही नहीं होगा क्योंकि एंट्री पॉइंट इनटू एप्लीकेशन, यहाँ से ही कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा. फिर कोई भी चीज हमको प्रिंट करवानी है जावा में, जैसे PHP में इको यूज करते हैं, C के अंदर प्रिंट यूज करते हैं, वैसे ही जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट println हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड हमको आउटपुट में प्रिंट करके देगा. अब नेमिंग कन्वेंशन फॉर अ क्लास. नेमिंग कन्वेंशन मीन्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट इज अ क्लास और फंक्शन. फॉर क्लास we can use first uppercase and after subsequence, after that uppercase first letter only, like C, W and S all are in uppercase, like CodeWithSunil. C code starting or C with starting or W uppercase, Sunil starting or S uppercase. Then main also M uppercase. Like in function and variables both we can use camelCaseConventions. Here the first character is lowercase, after the subsequent character are in uppercase, like code with Sunil. W uppercase and Sunil also uppercase. C is in lowercase. Like main M is lowercase. Thank you.